7 central and state agencies. (652) rescue workers. Only one mission. Hope, humanity and teamwork. Light at the end of the tunnel. Hope, humanity and teamwork. We are calling it the Great Indian Rescue here on India Today. 1 billion people across the country and many more across the world were pleasantly surprised by the 17-day-long rescue operation that ultimately brought out 41 people trapped inside the tunnel. Now, 7 central teams, several state agencies, global experts, the Indian Army, the Indian Air Force, the National Disaster Response Force, the NDMA, Health and Railways Ministries, all these agencies and individuals working together as one team. The government of India pulled all stops to ensure that the workers were brought out safely. The directions from Prime Minister Narendra Modi were crystal clear. The 41 workers must be rescued alive at all costs. Spontaneous celebrations at the Silkyara tunnel as the 41 trapped workers were pulled out to safety. Till minutes earlier, it seemed like mission impossible. 17 days of oscillating between hope and despair. Many had given up hope when the ogre machine broke down, and some were in despair with mudslides blocking rescue operations. But workers inside say they were always confident they would not be abandoned. तू में हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। देश के लोगों को चिंता थी और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था। Foreman Gabbar Singh here telling Prime Minister Narendra Modi he was confident of being rescued. And there is a reason for this confidence. Be it the Russia-Ukraine war zone or Indians trapped in war-torn Sudan or the crisis in Yemen, Prime Minister Narendra Modi insisted Indians be brought out of harm's way in every situation. And this past precedence gave the workers confidence that the government would not abandon them. 17 days of being trapped, workers knew efforts were being made by government agencies and even the private sector to bring them out safely. हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर। वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर। हमारे उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। There were multiple challenges initially. How to get the workers out quickly, how to keep their morale high inside the tunnel, how to ensure they were able to communicate with their families on Diwali, and how to get them oxygen, food and water supply. पहले दिन ही फोन आ गया था। जैसे ही वो अपने बॉर्डर के कार्यक्रम से दीपावली के बाद, वो चूंकि दीपावली के दिन हमेशा सेना के लोगों के बीच में रहते हैं, वहां से आने के बाद उनका फोन आया तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे प्रयास हम कर रहे हैं
तो उन्होंने कहा नहीं, सब प्रयास करिए और पूरी जानकारी उसकी करिए, कैसे कैसे क्या हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण ही जो है हैदराबाद से और इंदौर से और जब प्लान हुआ, मैं टोक रही हूँ इसलिए क्योंकि जब प्लान हुआ ऑगर मशीन मंगाने का, तो कितने घंटों में ऑगर मशीन आपके पास पहुंच गई? ऑगर मशीन तो हमारे पास तत्काली रात ही को आ गई, रात को आ गई और बल्कि वो मशीन इतनी हैवी थी, उसको एयरफोर्स के प्लेन से लाया गया। Foreign experts were also roped in to help in the operations. 17 days later, the world appreciates India's efforts and success. Australia's Prime Minister Anthony Albanese took to social media platform X to say, proud of India's achievement and the role of Professor Arnold Dix in India's successful rescue operations. We knew exactly what we wanted and we worked as a wonderful team. And when I say a wonderful team, the best engineers here in India, the army, their engineers, the best I've ever worked with, all the agencies, the federal authority, the state, all the people, it was just a joy. The operation was successful, but this wasn't luck, but sheer hard work. Prime Minister Narendra Modi spoke to Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami 8 times. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari visited the Silkyara tunnel, and General V.K. Singh, Minister of State and former Chief of the Army Staff, was deployed on Ground Zero to ensure all operations and coordination happen smoothly. And there were also top officials like Prime Minister Narendra Modi's Principal Secretary P.K. Mishra and Union Home Secretary Ajay Bhalla, ensuring that there were no roadblocks in the rescue operations. जिस प्रकार से किसी भी आपदा को या किसी भी देश की ऐसी चीज को हमारे प्रधानमंत्री जी लेते हैं, वो अपने आप के अंदर उसकी कोई मिसाल नहीं है। पूरे टाइम शुरू से लेके जब तक लोग बाग निकल नहीं गए और निकलने के बाद उनसे बात करना, ये उनके एक ऐसा गुण है लीडरशिप का जो आपको अमूमन देखने को नहीं मिलेगा। More than 30 central and state government agencies and departments worked round the clock to ensure smooth operations and a successful completion. But this wasn't the first time. In Operation Ajay, Indians caught in Israel were brought home safely. In Operation Ganga, Indians caught in the Russia-Ukraine conflict were flown out from Eastern Europe. Under Operation Kaveri, Indians trapped and strafed on Sudan were flown out of harm's way. As part of Operation Devi Shakti, with the Taliban takeover of Afghanistan and the situation fast deteriorating, Indian Air Force aircraft rushed Indians back home safely. Under Operation Rahat in 2015, from strife-torn Yemen, thousands of Indians were brought out of harm's way. Indian Navy brought out the Indians there. As part of Operation Vande Bharat, more than 60 lakh Indians were brought back home from across the world during the corona crisis. This past precedence gave tunnel workers confidence that no stone would be left unturned to bring them out of harm's way. Bureau Report, India Today. The Prime Minister was personally monitoring rescue operations in UttarKashi. The Prime Minister spoke to Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami virtually every day for the past 17 days. He also had his men on ground. For example, Union Minister Nitin Gadkari. He visited the site to oversee rescue operations. Nitin Gadkari wasn't the only one. General V.K. Singh, Minister of State, Road Transport and Highways, former Chief of the Army Staff, he camped at the tunnel site in person. And he was there monitoring operations, ensuring that there were no niggles, and if there were any problems, they could find a solution immediately. Bhaskar Kulbe, former advisor at the Prime Minister's office, oversaw the entire operation, again on site. Dr. P.K. Mishra, Principal Secretary to Prime Minister Narendra Modi,
visited the site in case there were any niggles, any problems. You know, there was final push after that horizontal drilling hit a roadblock. Army engineers, the former engineer-in-chief, General Harpal, and many others were on ground to ensure that work went on almost non-stop, and that problem was attacked from multiple directions. 3 directions is what people are aware of, but this was a 6-pronged offensive that was mounted. Prime Minister Narendra Modi was watching the tunnel rescue operations live in his office. Several cabinet colleagues were with the Prime Minister, and India Today reporters reporting the story say that the Prime Minister got emotional when all 41 tunnel workers were finally rescued and evacuated safely. He could barely wait till the initial medical examination was over. He said so himself when he spoke to them close to midnight last night to know about their well-being. सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं, और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे, तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल कर के आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह पे हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो पीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे, और डिसिप्लिन जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। गबर सिंह नमस्ते सर। जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गबर सिंह, जय हिंद। देखो गबर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को
एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। And from the Madras sappers to the Border Roads Organization, Indian Army engineers were involved with this rescue operation from the word go. Not just the Army, the Indian Air Force was roped in to move the auger machine, the men and material for the rescue and evacuation operations. Be it protecting our borders or coming to the aid of civil authorities in natural calamities, the Indian Armed Forces have forever been at the forefront of keeping India and Indians first. An incredible conclusion to a 17-day ordeal. तो मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना। और आप लोग स्वस्थ रहें और इसी प्रकार एक टीम बना करके हिम्मत के साथ आगे हम बढ़ते रहें और आप भी देश के लिए एक प्रेरणा बनते रहें, यही एक मेरी हमेशा प्रार्थना रहेगी। A momentous task on challenging mountainous terrain. The Indian Air Force dropped heavy equipment. The Indian Army swiftly mobilized to construct a drift tunnel. Army engineers formulated multiple strategies as roadblocks impeded progress. The NDRF, working in tandem with state disaster personnel, established crucial communication lines. When metal girders, rocks and concrete caused a massive earth boring machine failure, Army engineers turned to rat miners. अभी तकरीबन 1.5 मीटर की पाइप है जो डैमेज्ड है, उसको निकालने का काम जारी है। जब वो हो जाएगा उसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी और पूरा मक क्लियरेंस हो जाएगा, फिर मैनुअल जो कि हमारे पार्टीज हैं, जो स्किल्ड लेबर्स हैं, वो प्लस आर्मी की सहायता से उसको आस्ते आस्ते जाएंगे। 10 से 11, 12, 13 मीटर जो बचा हुआ है। Temperatures dropped, but the spirits soared in the bitter cold. Army personnel played a crucial role in constructing a track on the hilltop, a contingency plan if rescuers reached trapped workers through the vertical drilling. A well-deserved celebration by the NDRF, who poured their heart and soul into the rescue mission in coordination with multiple agencies and rat miners. Located through endoscopic cameras, supplied through slender pipes. Their morale kept high in the midst of an agonizing rescue. Successfully brought out alive in good mental and physical health. Airlifted to a hospital for routine checks. A testament to seamless collaboration, unparalleled courage and teamwork to successfully rescue the trapped workers. Bureau Report, India Today. The mountains presented a Himalayan challenge almost every day. The American auger machine, it was flown in, it broke down several times. Ultimately, it were the rat miners to the rescue. 12 rat miners split into 4 teams of 3. They used spades and shovels and demolition hammers to reach the 41 trapped workers. This is their story.
India saving 41 trapped workers in an epic Himalayan rescue. This is the moment when a team of 12 Delhi-based rat hole miners pulled out the 41 trapped workers successfully, making the nation elated, relieved and emotional. Workers who spent 17 days in the heart of darkness took a sigh of relief. When the high-tech heavy machines failed to make any major breakthrough, human hands made India's biggest rescue mission a roaring success. It was on Monday when the 12 rat miners were pressed into the task of digging horizontally after the auger machine failed, its blades getting entangled in the debris. The last 10 to 12 meters of debris was proving too much for the sophisticated machines, but the gritty miners went where no machine had ever gone, burrowing through the obstacles in less than 24 hours. In an exclusive chat with India Today, the miners narrated the challenges inside the tunnel. में किसी ने रेस्ट नहीं किया, सबने मतलब जितना टाइम हमने उनको रेस्क्यू किया तब तक काम कंटिन्यू रहा। और आप इस चीज को हम ये नहीं बोल रहे कि हम अपनी तारीफ ज्यादा कर दें, ये आप वहाँ से किसी से भी पूछेंगे सब यही बताएंगे हमने कंटिन्यू काम किया। ये रियल है, रियलिटी है। मकसद बना लिया था, एक मिशन बना लिया था जो 7 मजदूरों की, वो 41 मजदूर जो है उनकी एक हमें बहुत बता, उन्हें भी बचाना है, कुछ भी करना है, उन्हें बचाना है। और लोगों को हम पे उम्मीद हो गई थी, इस मारे हमें और मेहनत करनी है। As the last pipe was inserted and the rat miners entered the seal cavity, the trapped workers erupted in joy and hugged them. Munna Qureshi, who was the first miner to reach the trapped men, narrated the elation all around. क्लियर नहीं करते तो वहीं पे रहते, मगर वहाँ से वापस नहीं आते। और आवाज मार के बुला लो, ऐसा हमें लगता नहीं था जो हम क्लियर ना कर पाए। हम 12 लोगों पे इतनी उम्मीद थी हमको, हमसे करके हटाएंगे। और हमने करके उन्होंने बोला कोई प्रोसेस हो आपका सामान था, मैंने जो भी चाहिए होगा आपको बता देंगे। उनका बहुत सहयोग था हमारे साथ, उन्होंने किसी भी चीज की हमारे पास कमी नहीं रखी और हम आगे बढ़ते चले गए और उनके पास पहुंच गए। उन लोगों ने भी हमें बहुत प्यार दिया है। The rescuers flashed victory signs, signaling their massive win, which ensured that 41 workers returned safe to their families. India hails the fearless, the courageous rat miners and the heroes of the final rescue. Bureau Report, India Today. You are watching India Today, powered by Finest, Be Sustainable Change, a B&P Group company. If the engineers and city planners and then the road planners and hydro infrastructure planners, they understand first the geology, then ecology, and then they design the infrastructure and make nature as an ally to fight disaster in the Himalayas. Then the infrastructure would be disaster resilient. This infrastructure would be in the long term cost effective, and disaster could be also very inclusive to human suffering. Means that the disaster will create green jobs, they will also create prosperity using nature's power. इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमने समय के अनुसार सीखा भी है और घटनाएं इस तरह की आती हैं और आएंगी भी, तो इसके साथ सीखते चले जाएंगे। लेकिन बेहतर तरीका ये भी है कि जैसे जैसे हमारे अनुभव हों वो जुड़ते चले जाएं आगे की रणनीति में। देखिए, हिमालय
इसलिए भी अलग है कि जितनी भी त्रासदियाँ आ रही हैं वो सबसे ज़्यादा हिमालय में ही आएंगी। आईपीसीसी की रिपोर्ट ने कहा है जिस तरह से हीट वेव्स हैं, तूफान आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, उसका बड़ा असर हिमालय पे पड़ना तय है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई होगी, विज्ञान तकनीकी से समाधान निकलता है। You are watching India Today, powered by Finest. Be sustainable change, a B&P Group company. अब आप लोग पूरी तरीके से पूरे एकदम हम लोग संतुष्ट हैं, बहुत खुशी है हम लोग के अंदर। भगवान और सरकार सबका हम लोग भगवान से दुआ करता हूँ कि जहाँ भी रहे अपना मंगल रहे, पूरे विश्व में शांति रहे, भगवान से यही दुआ करूँगा। और अपने सरकार, ये बताइए कि आपकी बात हुई, देखा आपने? देखा, बात भी हुआ, सब कुछ हुआ। अभी सुबह में भी आया था फोन, बात हुआ, सब कुछ सही है। अब हम लोग खुशी हैं। 17 दिन कटे कैसे आप लोगों? कष्ट में था, कोई मन कहीं भी नहीं लगता था, कोई काम नहीं करते थे। हम इधर उधर पगलों जैसा घूमते थे, इनसे उनसे समाचार लेते थे, देखते तो नहीं थे। देखने पर और थोड़ा सा तकलीफ होने लगता था कि रिक्वेशन जो चल रहा है वो बीच में रुक जा रहा है, बाधाएं आ रही हैं। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा निर्वस हो जाते थे। फिर भी जब काम चलने लगता था तो हम लोग को खुशी होती थी कि चलो प्रभु किसी तरह से काम करे, आज नहीं कल निकल जाएंगे। हम लोग को विश्वास था, हम लोग हिम्मत भी रखे थे और यही सोच कर कि चलिए भगवान हम लोग के अंश में अगर दिए होंगे तो आएंगे ही। अपने 17 दिन बहुत कुछ झेला आपके पूरे परिवार ने, आप लोग को याद सता रहा था कि भाई क्या होगा पता नहीं। 17 दिन हो गए हैं। कल जब ये समाचार मिला आपको कि अब वो आखिरकार बाहर आ गए हैं, तो पहला आपका क्या प्रतिक्रिया थी? सर, हमें तो इतना खुशी हो रही थी कि हम किससे बताएं कि हमें इतना खुशी हो रही, हम क्या करें। तब हम मतलब शाम को दीपावली मनाए, वो लोग मतलब बाहर निकल गए, तब